Hello friends, in computer teacher or senior computer instructor, we are having artificial intelligence. तो आज मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा जो आपके AI के टॉपिक्स से एग्ज़ाम में आएगी. सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिथम. दैट मीन्स अगर हम बात करें तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ ARTIFICI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसी में फर्स्ट आता है एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम होती क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स दैट अ मशीन कैन फॉलो टू लर्न हाउ टू डू अ टास्क. यानी कि सेट ऑफ रूल्स को मशीन फॉलो करती है और उस टास्क को सीखती है. नेक्स्ट टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस रेफर टू द जनरल कंसेप्ट ऑफ अ मशीन एक्टिंग in a way that simulates or mimics human intelligence. AI can have a variety of features such as human-like communication or decision making. Next term is that autonomous. A machine is described as a autonomous if it can perform its task और टास्क विदाउट नीडिंग ह्यूमन इंटरवेंशन. तो मतलब क्या हुआ कि मशीन जब भी टास्क करती थी यानी बिना ह्यूमन के वो टास्क परफॉर्म कर सके. दैट इज ऑटोमेशन. नाउ बैकवर्ड चेनिंग. अ मेथड वेयर द मॉडल स्टार्ट विद द डिजायर्ड आउटपुट एंड वर्क्स इन रिवर्स टू फाइंड डाटा दैट माइट सपोर्ट इट. यानी कि क्या होता है, जब मॉडल स्टार्ट होता है तो उसके आउटपुट में जो रिवर्स डेटा फाइंड होता है वो सब किसके थ्रू होता है? बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू. नेक्स्ट इज बायस. अजम्पशन मेड बाय अ मॉडल दैट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू डू इट्स असाइन्ड टास्क. मोस्ट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म बेटर विद लो बायस एज दिस अजम्पशन कैन नेगेटिवली अफेक्ट रिजल्ट. यानी कि बाइस मतलब क्या हो गया कि सिंपली प्रोसेस ऑफ लर्निंग असाइन टास्क. यानी कि जो टास्क असाइन हुआ है उसके लिए सिंपल प्रोसेस लर्निंग में बेटर कैसे किया जाए. नाउ बिग डाटा दैट आर टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स टू बी यूज बाय ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. यानी बिग डाटा में क्या है, आने वाले समय में डेटा स्ट्रक्चर और डेटा मतलब बिग डाटा, ऐसे डेटा जिसको मैनेज करना स्टोर करना काफी इंपॉर्टेंट है. बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है? बी बॉक्स कॉमनली यूज इन इमेज और वीडियो टैगिंग. दिस इज इमेजिनरी बॉक्स ड्रॉ ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन. द कंटेंट ऑफ द बॉक्स आर लेबल्ड टू हेल्प अ मॉडल रिकॉग्नाइज इट एज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बाउंडिंग बॉक्स में क्या होता है कि जब हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन या AI के थ्रू जब भी कोई मॉडल बनाते हैं तो वो जो वेबकैम के थ्रू फेस को रेक्टेंगुलर शेप में डिटेक्ट करता है, आईज को, इनको. तो वो सब किसके थ्रू होता है? बी बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू. चैटबॉट की बात करते हैं तो चैटबॉट आप लोग सब जानते ही हैं, अमेजोन में है, हर बैंक का अपना चैटबॉट है. तो चैटबॉट क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है. अ चैटबॉट इज अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू कम्युनिकेट विद पीपल थ्रू text or voice command in a way that mimics human to human conversation. Now next is cognitive computing. This is effectively another way to say artificial intelligence. It's used by marketing team at some companies to avoid the science fictions aura that sometimes surround AI. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्केटिंग टीम है वो कंपनीज को अवॉइड करती है साइंस फिक्शन के लिए. तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी. अ फील्ड विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज primarily concerned with creating and analyzing machine learning algorithm. नेक्स्ट वन इज कॉर्पस. कॉर्पस क्या होता है कि जो भी आपका आपने सुना होगा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट वन कॉर्पस, जहां पर टेक्स्ट की जो होती है एक लार्ज डेटा सेट ऑफ रिटर्न
यानी कि कॉर्पस क्या है? अ लार्ज डेटा सेट ऑफ रिटन और स्पोकन मटेरियल दैट कैन बी यूज टू ट्रेन अ मशीन टू परफॉर्म लिंग्विस्टिक टास्क। यानी कि चैटबॉट में ये काम आता ही आता है। डेटा माइनिंग दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा सेट इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू पैटर्न्स दैट माइट improve the model. Now next, data science, drawing for statistics, computer science and information science. The interdisciplinary field aim to use a variety of scientific methods, processes and systems to solve problems involving data. Data set, a collection of related data points usually with a uniform order and टैग। तो डेटा सेट क्या होता है? एक CSV फाइल हो सकती है जिसमें आपका डेटा होता है, तो उस डेटा से जो कलेक्शन है उन पॉइंट्स को यूज करते हुए एक प्रोग्राम क्रिएट करना। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग मेनली अगर हम बात करें AI, तो AI में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अगर हम अंदर जाएं सेकंड पार्ट में तो मशीन लर्निंग होता है, और मशीन लर्निंग से भी अगर डेप्थ में जाना है तो डीप लर्निंग। तो एक a function of AI, artificial intelligence, that imitates the human brain by learning from the way data is structured rather than from an algorithm that's programmed to do one specific thing. Now next one is entity annotation, the process of labeling unstructured sentence with information। यानी कि किसी भी प्रोसेस में जो अनस्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है उसको एक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में लेबल्ड करना, सो दैट अ मशीन कैन रीड देन। दिस कुड इन्वॉल्व लेबलिंग ऑल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज एंटिटी एक्सट्रैक्शन, an umbrella term referring to the process of adding structure to data so that a machine can read it. Entity extraction may be done by humans or by a machine learning model. Forward chaining, a method in which a machine must work from a problem to find a potential solution. By analyzing a range of hypotheses, the AI must determine those that are relevant to the problem. General AI that could successfully do any intellectual task that can be done by any human being. So this is sometimes referred to as a strong AI, although they aren't entirely equivalent terms. Now hyperparameter, occasionally used interchangeably with parameter, although the terms have some subtle differences. And hyperparameter are values that affect the way your model learns. They are usually set manually outside the model. Now next one is intent, commonly used in training data for chatbots and other natural language processing, that means NLP task. So this is a type of label that defines the purpose of goal of what is said. For example, the intent for the phrases turn the volume down could be a decrease volume. Now a label part of training data that identifies the desired output for that particular piece of data. Linguistic annotation, tagging a data set of sentence with the subject of each sentence ready from some form of analysis or assessment. Common uses for linguistically annotated data include sentiment analysis and natural language processing. So that means speech recognition and corpus and NLTK terms we are using of this. Okay, now next is machine intelligence, an umbrella term for various types of learning algorithm including machine learning and deep learning. So now we'll talk about machine learning. This subset of AI is particularly focused and developing algorithm that will help machine to learn and change in response to new data without the help of a human being. Now machine translation, the translation of text by an algorithm independent of any human involvement. Now we'll talk about model, a broad term referring to the product of AI training created by the running machine learning algorithm
और ट्रेनिंग डाटा. सो जो ट्रेनिंग डाटा हम प्रिपेयर करते हैं वो एक मॉडल के रूप में प्रिपेयर करते हैं कोड को. नाउ न्यूरल नेटवर्क, ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूरल नेट. अ न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटर system designed to function like the human brain. Although researchers are still working on creating a machine model of the human brain, existing neural networks can perform many tasks involving speech, vision, and board game strategy. Now next is natural language generation. This refers to the process by which a machine turns structure data into text or speech that humans can understand. Essentially, analogy is a concern with what a machine writes or say as the end part of the communication process. Now next one is NLP, natural language processing, the umbrella term for any machine ability to perform conversational tasks such as recognizing what is said to it, understanding the intended meaning, and responding intelligibly. Now again, natural language understanding as a subset of NLP, natural language understanding deals with helping machine to recognize the intended meaning of language, taking into account its subtle nuances and any grammatical errors. तो ये हेल्प करती है उस प्रोसेस में. नाउ आवर फिटिंग, एन इम्पोर्टेंट AI term, our fitting is a symptom of machine learning training in which an algorithm is only able to work or identify specific example present in the training data. A working model should be able to use the general trends behind the data to work on a new example. Now next is parameter, a variable inside the model that helps it to make predictions. A parameter's value can be estimated using data and they are usually not set by the person running the model. Pattern recognition, this distinction between pattern recognition and machine learning is often blurry, but this field is basically concerned with finding trends and pattern in data. Now next is predictive analytics. By combining data mining and machine learning, this type of analytic is built to forecast what will happen within a given time frame based on a historical data and trends. Now Python, a popular programming language used for a general programming. So next one is reinforcement learning. तो आपकी जो मशीन लर्निंग है वो डिवाइड है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट रीइंफॉर्मेशन, a method of teaching AI that sets a goal without specific metrics, encouraging the model to test different scenarios rather than find a single answer based on a human feedback. The model can then manipulate the next scenario to get better result. Now semantic annotation, taking a different search queries or product with the goal of improving the relevance of a search engine. Now sentiment analysis, the process of identifying and categorizing opinions in a piece of text, often with the goal of determining the writer attitude towards and some things. Now strong AI, this field of research is focused on developing AI that is equal to the human mind when it comes to ability. General AI is a similar term often used interchangeably. Now next is supervised learning. This is a type of machine learning where structured data set with input and labels आर यूज टू ट्रेन एंड डेवलप एन एल्गोरिथम. यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब मशीन से एक स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट को इनपुट और लेबल दी जाती है और एक मॉडल या एल्गोरिथम डेवलप की जाती है ट्रेनिंग और टेस्टिंग करने के बाद. टेस्ट डाटा, the unlabeled data used to check that a machine learning model is able to perform its assigned task. Now training data, that means this refers to all of the data used during the process of training a machine learning algorithm as well as the specific data set for use training rather than testing. Now transfer learning, this method of learning involves spending time teaching a machine to do a related task, then allowing it to return to its original work with improved accuracy. One potential example of this is taking a model that analyzes sentiment in product reviews and asking to it analyze tweets for a week. Now Turing test,
this is the AI test for named after Alan Turing, famed mathematician, computer scientist, and logician. This test a machine ability to pass for a human, particularly in the field of language and behavior. After being graded by a human, the machine passes if its output is distinguishable from that of human participant. तो ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली मशीन की AI टेक्निक चेक करने का काम आता है, और जो एलन ट्यूरिंग है इनके नाम से ही कंप्यूटर का नोबेल दिया जाता है, ट्यूरिंग अवार्ड, और इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है. नाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. This is a form of training where the algorithm is asked to make inference from data set that don't contain labels. These inference are what help it to the learn. Now next is validation data, structured like a training data with an input and labels. This data is used to test a recently trained model against new data and to analyze perform with a particular focus on checking for overfitting. तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर डाटा है उसको ट्रेनिंग डाटा के साथ इनपुट जो लेवल्स दी जाती है उन सबको टेस्ट किया जाता है रिसेंटली, एंड मॉडल को ट्रेन किया जाता है. वेरिएंस की बात करें तो द अमाउंट दैट द इंटेंडेड फंक्शन ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल चेंजिंग while it's being trained despite being a flexible model with high variance are prone to overfitting and low predictive accuracy because they are reliant on their training data. Now variation, also called a queries or utterances, these work in tandem with intents of a NLP. The variation is what a person might say to achieve a certain purpose or goal. For example, if the intent is pay by credit card, the variation might be I would like to pay by card please. Now weak of AI, also called a narrow AI. This is the model that has a set of range of skill and focuses on one particular set of tasks. Most AI currently in use in a weak AI, unable to learn or perform tasks outside its general skill set. So now this is the part of AI. It is sufficient for artificial intelligence, I think. So thank you. Have a nice day. Bye bye.